Bismillahirrahmanirrahim. We are covering inventories, and so far we have covered the cost of inventories, and we have studied that what are the elements of the cost of inventories that are comprising the total cost of the inventories, and we have also looked upon the valuation of closing inventories through various cost formulas. We have covered FIFO, LIFO and weighted average. Today we are going to study net realizable value. But before going into the details of net realizable value, let me tell you that as per the globally accepted accounting principles related to inventories, it is a rule as per those accounting principles that inventories shall be measured at lower of cost and net realizable value. So this is the measurement criteria for inventories as per the globally accepted accounting principles. Okay, and you can also say that this is international accounting standards. So these standards are the accounting standards that are accepted globally and that are followed globally. So as per those standards, inventories shall be measured at lower of cost and net realizable value. So far we have covered the cost element, and today we are going to study what is net realizable value or NRV. But the question is like why this criteria is given, like why they are saying that inventories should be measured at lower of cost and net realizable value. So like as many elements of the financial statements, there are some risks involved with the inventories. Okay, inventory is an asset, so there is a risk that an asset can be overstated. Okay, so the risks that are related to assets and revenues are that like they should not be overstated, and for liabilities and expenses the risk is that they should not be understated in the financial statements. Okay, so suppose if a business is having assets and which are being overvalued, so it will attract the investors towards that business, and they will see that business is growing and the assets are having high value as compared to the liabilities. And like if revenues are overvalued and being excessively overvalued, that will attract more investors, so they might invest their money, which might end up in making a loss because the financial statements were giving a misleading picture that assets and revenues were excessively overvalued in a wrongly manner. Okay, so there is a risk with assets and revenues, and similar type of risks is with liabilities and expenses is that they can be understated, means that your liability might be for a bigger amount, but in the financial statements you shown a liability at a lower amount, so any user of the financial statement might be misled with these liabilities. And similar is the case with the expenses. So these are the risks that are like inherent risks in the financial statements for these type of elements. So inventory is one of the asset, and as we discussed, that risk related to inventory is again the overstatement risk. Okay, so the measurement criteria which the accounting standards has given for the inventory is that it shall be measured at lower of cost and net realizable value. So this is to cover and minimize the risk of overstatement, and how it will minimize the risk we will discuss it when later in the video, when we will see how net realizable value is computed and what is the concept behind it. Okay, let me explain it in Urdu. इन्वेंट्रीज हमने कवर कर लिया है, इन्वेंट्री की कॉस्ट हमने देख ली है, और
आज हम पढ़ेंगे कि इन्वेंट्री का मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या होता है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ग्लोबली हैं वो ये कहते हैं कि इन्वेंट्रीज शैल बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब ये तो मेजरमेंट क्राइटेरिया है। मेजरमेंट क्राइटेरिया इसलिए दिया गया है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस रिपोर्ट होते हैं, इनसे रिलेटेड एक नेचुरल रिस्क है। एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स और रेवेन्यूज जो हैं उनसे रिलेटेड रिस्क ये है कि उनको ओवरस्टेट ना कर दिया जाए, यानी कि एसेट्स को बढ़ा के या रेवेन्यूज को बढ़ा के ना लिख दिया जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। और इसी तरह से लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस जो हैं उनके अंदर ये रिस्क है कि उनको अंडर स्टेट ना कर दिया जाए, यानी कि आपकी लायबिलिटी ज्यादा थी, आपने अपनी लायबिलिटी कम शो कर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, आपके एक्सपेंसेस ज्यादा थे और आपने कम एक्सपेंसेस शो किए, उससे क्या हुआ कि आपका प्रॉफिट ज्यादा नजर आने लगा। और तो इससे होगा ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो एक मिसलीडिंग पिक्चर जो है वो देंगे और जो यूजर्स हैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेसिस पे करेक्ट डिसीजंस वो नहीं ले सकते, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेसिस पे जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको कुछ डिसीजन मेकिंग भी करनी होती है। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग पिक्चर देंगे देन द यूजर विल नॉट बी एबल टू मेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजंस और द करेक्ट डिसीजंस, ठीक है। सो इन्वेंट्री भी एक जो है एसेट है। अब इन्वेंट्री से रिलेटेड भी रिस्क है ओवर वैल्यूएशन का, ओवर स्टेटमेंट का, ठीक है। जो हमने अभी देखा कि कॉस्ट फॉर्मूलाज के थ्रू हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करी, तो एक रिस्क है कि इन्वेंट्री ओवरस्टेट हो सकती है। अब अगर इन्वेंट्री ओवरस्टेट होगी, आप सबको पता है कि उसमें ये रिस्क है कि जब इन्वेंट्री ओवरस्टेट होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट भी ओवरस्टेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो क्राइटेरिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ने दिया इन्वेंट्री के लिए वो ये है कि इन्वेंट्री शैल बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अच्छा, अब ये क्राइटेरिया है। हमने अभी तक कॉस्ट एलिमेंट कवर कर लिया है, आज हम कवर करने जा रहे हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। नाउ लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू। The definition of net realizable value says NRV is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated cost of completion and the estimated cost necessary to make the sale. Okay, from the definition it says estimated selling price in the ordinary course of business, which may be your normal selling price, okay, less your estimated cost of completion. And what is estimated cost of completion? I will explain it. And the estimated cost necessary to make the sale. So the concept is that there might be circumstances in which the inventories that are saleable in the ordinary course of business might not be saleable in that way, okay. For example, some extraordinary circumstances might arise, like any changes in the regulations, any changes in the environment, some maybe there is some more competition, like some new competitors came into the market and you are facing tough competition, so that there is a pressure on your product that you might not be able to sell your product easily, or there are circumstances that your product might be partially obsolete, or there are some new products coming in the market that will make your product obsolete in front of them. So you might be facing some difficulty in selling the product. So all these circumstances might result in reducing your selling price, which you would normally have in the ordinary course of business. So apart from that, like your selling price might reduce due to such circumstances. So in those cases you will estimate a selling price, and then you will estimate what is the expenditure that is required
to make this sale, to completely sell this product to the end customer. So what are the expenditure required? So this estimated cost of completion refers to that. Okay, you might need to incur some, for example, selling expenses. Okay, you might need to hire some agents so that they can sell your product in the market, and on as a result they will charge you a commission. Okay, that might be a cost which is estimated cost necessary to make the sale, or you might be required to make some adjustments or some like some changes to your product in order to sell the product. You might need to do some modifications into your product so that your product will become compatible in the market and will compete with the other products that are new entrants in the market. So these type of things can happen, and that will call the estimated cost of completion. So the concept is, if such circumstances arises, you will estimate your selling price and you will deduct any estimated cost of completion and any estimated cost necessary to make the sale, and then the resultant will be your net realizable value. Okay, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि जहां पे जो नॉर्मल ना हो, यानी कि आप अपना बिजनेस कर रहे थे, अब क्या हुआ, मार्केट में कोई नए कंपेटिटर्स आ गए और उन्होंने कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दी हैं जो बिल्कुल आप ही की प्रोडक्ट की तरह है, लेकिन उसका न्यू वर्जन है समझ लें, या उसकी कोई वेरिएशन ऐसी है जो ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है कस्टमर्स को। उसमें इस तरह के सर्कमस्टांसेस में क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर एक प्रेशर आ जाएगा और आपकी प्रोडक्ट इतने आराम से मार्केट में सेल नहीं हो पाएगी जैसे पहले होती थी। ठीक है, तो उस सूरत में आपको ये देखना पड़ेगा कि अब इसकी रिवाइज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है, पहले हो सकता है आप एक प्रोडक्ट अपनी 100 रुपीज की नॉर्मली सेल करते हो, अब क्या हुआ कि एक कंपेटिटर आ गया, वो अपनी प्रोडक्ट जो है उसने 90 रुपीज में लॉन्च कर दी है। अब आपको 100 रुपीज में बेचने में मुश्किल हो रही है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि आप अपनी सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करेंगे। हो सकता है आपने कोई एजेंट्स हायर करने पड़े और उनको कोई इंसेंटिव देना पड़े आपको। हो सकता है आपकी जो है उनको आपने कोई कमीशन देना पड़े कि अगर आप उनकी प्रोडक्ट सेल कर दें तो हर सेल के ऊपर उनको कोई परसेंटेज मिल जाए कमीशन की। ठीक है, इस तरह से आपने कुछ अरेंजमेंट्स करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू मेक योर गुड्स सेलेबल। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट थोड़ी सी ऑब्सोलीट हो गई है, थोड़ी पुरानी हो गई है, अब मार्केट में नई इसकी वो आ गए कंपेटिटर्स और उन्होंने नई प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, तो आपकी प्रोडक्ट थोड़ा ऑब्सोलीट हो गई। इसकी वजह से जो है ना उसमें आपको थोड़ी वेरिएशंस करवानी पड़ रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ उसके ऊपर उसको सेल करने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसको कहते हैं ये एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। तो इस तरह के जो एक्सपेंडिचर होंगे ना वो आप सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी ना वो होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एग्जांपल से, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स गो थ्रू द एग्जांपल। So I've created this example just to give you more understanding of the concept that why we require net realizable value. Okay, so ये example जो है आपको अंडरस्टैंडिंग देगी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू का कॉन्सेप्ट है क्या और कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहां पे ये ज़रूरी हो जाता है कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू कंप्यूट की जाए और उसको फिर कंपेयर किया जाए कॉस्ट से, और फिर एनआरवी इन्वेंट्री की मेजरमेंट की जाए ऑन द क्राइटेरिया लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, तो अब इस एग्जांपल को देखते हैं। लेट्स गो थ्रू द एग्जांपल। ABC company is a distributor of locally manufactured tires. On June 30, 2022, ABC has an inventory
of 120 locally manufactured tires at a unit cost of 6,000 each. So this is the closing inventory on June 30. During the month of June 2022, the government of the country allowed the import of tires from different global tire manufacturers across the world. Import of tires was banned previously in the country. Okay, so there was a complete ban on the import of tires previously in the country, but now in the month of June, the government has allowed the import of tires. Okay, so what will happen? This will create a competition in the market. New entrants will be there in the market of tires, and they will import tires. And let's see what will happen. So further information is given. It is expected that imported tire would be sold in the local market at a selling price of rupees 5,000 each to the end customer. The reason for such low price is that government has also waived the custom duty on the import of tires. Okay, so this gives a scenario that even the import duty has been waived by the government, and that will result in a much lower price of the imported tires as compared to the locally manufactured tires. So these are very adverse circumstances for these type of uh, sellers. Like if you see the inventory they have on June 30, and the unit cost of that inventory is 6,000. Okay, whereas the selling price of the imported tire is 5,000. Okay, so there will be a difficulty for them to sell their locally manufactured tires in the market, and the reason could be the imported tires will be much better in the quality. This may be a reason, and another reason is that they also get advantage of the waiver of the custom duty. That will result in a lower selling price. So benefit goes to the those competitors who are importing tires from the world, from the different countries. So now in this situation, they have an inventory which is valued at cost, which is 6,000. Okay, so now let's go through further in this example, and then we'll see what will be the result and what is the impact of this situation on their inventory. The sales team of ABC informed that there is another tire dealer and he is ready to purchase all their current of locally manufactured tires at a price of rupees 3,000 each. Okay, so the dealer is ready to purchase all their stock at a price of rupees 3,000, which is much lower than their cost, almost 50% of their cost. Okay, and is willing to sign a deal with ABC for this purchase. The agreement for sale of tires was signed with the dealer in first week of July 2022. So they were definitely they will have difficulty in selling this current stock of locally manufactured tires uh, because their selling price is much higher than the selling price of the imported tires. So their sales team did some struggle, and they find a dealer who is finally ready to purchase their stock, but at a very reduced selling price, which is 3,000. Okay, uh, so they sold all their stock uh, of the locally manufactured tires at 3,000. And further information that is given is that during June 2022, ABC made tire sales of rupees 1.5 million and purchased tires from local manufacturers of rupees 1.1 million. There was no opening inventory on 1st June. Okay, now these are circumstances in which there are like new entrants in the market. Okay, अब इस सिचुएशन में हुआ ये है कि उनकी ओपनिंग जो उनकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसकी जो वैल्यूएशन है वो हुई हुई है कॉस्ट के ऊपर, जो कि 6,000 है. अब 6,000
उनकी कॉस्ट है, और जो नए टायर्स आ गए हैं इम्पोर्टेड टायर्स मार्केट में, वो उनकी सेलिंग प्राइस ही 5000 है। इसका मतलब ये बहुत ही प्रेशर आ गया है इस प्रोडक्ट के ऊपर कि कोई खरीदेगा ही नहीं। अगर उसको मार्केट में इम्पोर्टेड टायर जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, वो उसको 5000 में मिल रहा है, तो लोकली मैन्युफैक्चर्ड टायर्स वो 6000 तो उसकी कॉस्ट है, और अगर वो उसको प्रॉफिट अर्न करने के लिए 6000 से ऊपर ही कहीं बेचना पड़ेगा, तो इस पे तो कोई भी नहीं खरीदेगा। तो अब इस सिचुएशन में क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्या कॉस्ट पे वैल्यू किया जाए, या क्लोजिंग इन्वेंट्री को नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे किया जाए। अच्छा, अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगी इस केस में, आप डेफिनेशन रिकॉल करें। नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। अब इसमें एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है, वो ये है जो एक जो डीलर उनसे उनकी इन्वेंट्री परचेज करने के लिए तैयार है एट अ प्राइस ऑफ 3000, सो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या हो गई 3000। ठीक है। अच्छा, इस सिनेरियो में हमारे पास कोई एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन नहीं है, कोई एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल नहीं है, बस एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और उसी के ऊपर सेल हो जाएगी हमारी। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि देयर इज नो अदर कमीशन और समथिंग लाइक दैट। सो तो इस केस में अब सवाल ये है कि क्या इन्वेंट्री को 6000 पे वैल्यू किया जाए या इन्वेंट्री को 3000 पे वैल्यू किया जाए। दिस इज द क्वेश्चन। we need to whether we need to value the inventory at 6000 which is unit cost, or we need to value the inventory at 3000 which is net realizable value. So this is the question, and we will compute the inventory with cost and NRV both, and we will see how it will impact the gross profit. Okay, so I've created the trading portion of the income statement under both the scenarios for the month of June. The closing inventory valued at cost. These are the two scenarios. One is closing inventory valued at cost. Another one is closing inventory valued at net realizable value. Let's see how the results are. Now, if you see that inventory is valued at the cost, then it gives me a gross profit of 1.1 million. And if the inventory is valued at NRV, it gives me a gross profit of 760,000. Okay, now sales is 1.5, and the purchases that was given in the data, and I deducted closing inventory. From that I got my cost of goods sold and then the gross profit. Okay, so there is a big difference in the results under each of these scenario. And what will happen if we continue to value the closing inventory at cost? What will happen? So suppose if we go with this scenario and value the closing inventory at cost, what will happen? My gross profit will be 1.1 million in June. Okay, and if I go into July, then what will happen, that I will not be able to sell this inventory at a price with higher than 6000. So I have to sell this price, I have to sell this inventory at a price which is much lower than 6000, and in the information it is given that a dealer is ready to buy this at 3000. Okay, so I will sell it at 3000. So I will create a huge loss uh, on this sale. Okay, because my cost of the inventory was 6000 and I'm selling, my selling price is 3000, so I will create a loss, okay, of 360,000. But the international accounting standards and the globally accepted accounting principles say that we need to value inventory instead of cost on the NRV instead of cost. Okay, because what will happen if we value the inventory at NRV, it will give me the correct picture of reality, like what will happen with the sales of this inventory. Okay, I will not be able to sell this inventory at a price which is higher than the cost, which is higher than 6000. Okay,
So I'll only be able to sell it at the net realizable value. So I need to value this inventory at net realizable value. Okay. तो ये रिजल्ट्स हैं इन दो सिनेरियोज के. तो स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो उसमें तो फिर हमें इसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे ही वैल्यू करना पड़ेगा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट ये होगा कि अगर हम इसको कॉस्ट पे कर दें वैल्यू, तो उससे हमारा इस पीरियड का तो ग्रॉस प्रॉफिट बहुत अच्छा नज़र आएगा हमें, लेकिन नेक्स्ट पीरियड में अगर हम अज्यूमिंग कि यही इन्वेंट्री हमारे पास होती है, कोई नई परचेजेस नहीं होती हैं और इसी को सेल करना होता है, तो फिर क्या होगा कि उसमें तो हमारे पास लॉस आएगा. तो एक पीरियड में अच्छे ह्यूज प्रॉफिट्स आ रहे हैं, नेक्स्ट पीरियड में ह्यूज लॉसेज आ रहे हैं, तो इससे तो बड़ी पिक्चर जो है वो बड़ी डिस्टॉर्ट हो जाएगी. जो यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत मिसलीड हो जाएंगे. अगर वो जून के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें तो उनको लगेगा कि ये बिज़नेस तो बहुत ही प्रॉफिटेबल है, और जुलाई के देखेंगे तो उनको लगेगा कि ये तो लॉस मेकिंग बिजनेस है. तो बड़ी एक इनकन्सिस्टेंसी हो जाएगी इसमें, और इसमें जो रिजल्ट्स हैं उसमें फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा होगी कि उससे समझ में नहीं आएगा कि ये आखिर हुआ क्या है बिजनेस के साथ. ठीक है. तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हमें ये कहता है कि ये रीज़न है इन्वेंट्री को मेजर करने का एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू. ओके, so that's why we are required to measure inventory at lower of cost and net realizable value. ठीक है. तो हम यहाँ पे क्योंकि नेट रियलाइजेबल वैल्यू कॉस्ट से कम है, तो हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे ही वैल्यू करेंगे इन्वेंट्री को. ठीक है. तो ये हमने देखा कि इस तरह के सर्कमस्टांसेस जब हो जाएं तो वहाँ पे अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमारी कॉस्ट से रिड्यूस हो जाए तो फिर हमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे ही अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करना पड़ता है. ठीक है. अच्छा, यहाँ तो हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि ये होता कैसे, क्यों होता है. अब हम नेक्स्ट वीडियोस में ये देखेंगे कि जब हम ये करते हैं तो हमें इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या करनी होती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ठीक है. अच्छा, और हमें ये अब समझ में आ गया कि क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं जब हमें लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है इसको देखना पड़ता है. अच्छा, हमें एट ईच रिपोर्टिंग डेट हमें ये टेस्ट करना पड़ता है कि कहीं इन्वेंट्री की नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है उसकी कॉस्ट से रिड्यूस तो नहीं हो गई है, उसकी कॉस्ट से कम तो नहीं हो गई है. ये हमें हर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर ये टेस्ट करना पड़ता है. ठीक है. क्योंकि और उसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि इस तरह के सर्कमस्टांसेस जैसे ये हो गए, इस एग्जांपल में हमने देखे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो गए. ठीक है. पहले आराम से जो है वो सेल हो रही थी, लोकली मैन्युफैक्चर्ड टायर्स से, कोई नया एंट्रेंट मार्केट में नहीं आ रहा था, लोग इम्पोर्टेड कोई टायर्स नहीं थे, आराम से सेल हो रही थी. लेकिन एक ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए जहाँ पे हमें नज़र आने लगा कि अब तो जो है लोकली मैन्युफैक्चर्ड टायर्स को सेल करना बहुत मुश्किल है. तो इस तरह के सर्कमस्टांसेस जो है ना उसको देखना पड़ता है. ठीक है. इसीलिए ये क्राइटेरिया है कि इन्वेंट्रीज शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू. अच्छा, इसमें अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं. इस वीडियो को मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ. चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल. ठीक है. नेक्स्ट वीडियोस में हम ये देखेंगे कि अब ये तो हमने देख लिया कि कॉस्ट और एनआरवी कैसे कंप्यूट होती है और इस पे हमें मेजरमेंट किस पे करनी है. ठीक है. इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज जो हैं वो कैसे होंगी ये हम नेक्स्ट वीडियोस में अपनी देखेंगे. थैंक यू.